Yes. Lordship, FIR has already been lodged. Already lost. Lordship, what time I will submit? I have already filed a one rejoinder, Lordship, and they have filed one counter affidavit in this case, Lordship. But the counter affidavit, it is misleading fact has been brought on record before. Am I here to decide the facts in the writ application? No, Lordship. Then? They have already submitted final form. Yes. But in the counter affidavit, they have said that they were matter was under investigation. May I permit to? All right. So you admit that FIR has been lodged, case has been investigated, and final form has been submitted. No, Lordship. I submitted an application regarding death of my brother, Lordship. A UD case was registered, and in the counter affidavit, it was said that a UD case number, paragraph number 10, Lordship, of counter affidavit. Have a look, Lordship. Ki para 10 of counter affidavit. Yes. Ki that after completion of investigation of UD case number itna, the investigating officer who is at present in the SHO Rajouri police station, district Nawada, was submitted a written report on 21/3/2022 to the SHO Kotwali police station that offence committed against the brother of the petitioner comes under the category of cognizable offence, and requested to lodge a formal FIR against Priyanka Kumari and her family members under section 306(34) of IPC. What I submit, Lordship, actually they have submitted final report. It was not brought on record by the learned State Council, Lordship, for which I have already filed one rejoinder, Lordship. On the I have submitted a written report on 13/11/2017, Lordship, and on that day they have submitted final form, which was brought on record by Annexure 3 in my rejoinder application. So you admit that final form has been submitted? Lordship, अगर फाइनल यही फॉर्म चीज सबमिट हमने हो गया था, यही तो आपको हमने पहले पूछा, आपने कहा नो मिला। जी। एक बार आपने बोला व्हेन आई आस्क यू द हमको लगा कि क्वेश्चन, हजूर FIR हो जाने के बाद फाइनल फॉर्म हुआ ये चीज। FIR हुआ 21/3/22 को। जी। ठीक है जी। फाइनल फॉर्म कब सबमिट हुआ? 13/11/2017 को। 13/11/2017 को। जी। मेरे एप्लीकेशन पर इन्होंने UD केस रजिस्टर्ड किया और ऑन द सेम डे फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया। जब इस कोर्ट से काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश हुआ तो हड़बड़ी में इन्होंने इस फैक्ट को छिपाते हुए कि हमने फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया, FIR लॉन्च कर दिया, 5 साल के बाद FIR लॉन्च कर दिया, और इसको इन्होंने काउंटर एफिडेविट में कहीं नहीं लाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया इनके अनुसार से, तो कैसे ये FIR रजिस्टर्ड कर दिए? हजूर देखा जाए, हम इसको एनेक्सर 3 में लाए हैं अपने। हम इसको एक्सप्लेन, एक मिनट बोल लेने दीजिए। जी हजूर, हम इसको हजूर पैरा 7 में हम सारा एक्सप्लेन किए हुए हैं अपने रिजॉइंडर में, लॉर्डशिप। पैरा 7 ऑफ माय रिजॉइंडर एप्लीकेशन, लॉर्डशिप। यस, पैरा 7 ऑफ माय रिजॉइंडर, लॉर्डशिप, कि that the statement made in paragraph number 10 of the counter affidavit under reply is false, wrong and misleading, and as such is fit to be rejected by this honorable court. It is only subsequent development by the police to save their fault. It is humbly submitted that petitioner sought information under RTI regarding the development of the matter of the death of his brother. It was informed to the petitioner that on his application UD case number 6 of 2017 was registered on 13/11/2017, and it appears on the same day final form was submitted by one Darbari Chaudhary, the then SI of Kotwali police station, in compliance of oral order of then SI cum SHO Kotwali police station. So it appears that in UD case number so and so final form was submitted, neither it was brought on record nor it was made. In the counter affidavit it was suppressed and tried to mislead the honorable court. इसके बाद पैरा 8 में लिखे हैं कि it is humbly submitted that from very first day. All right, बोलिए मिस्टर अकबर। इसमें जो अक्रेंस है 7/11/2017 का, इन्होंने कहा कि मेरे भाई मिसिंग हैं। उसके बाद 13/11/17 को डेड बॉडी मिलती है, हम इन्फॉर्म करते हैं, यूडी केस लॉन्च होता है। यूडी केस में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इट वाज फाउंड कि इनके ब्रदर जो हैं वो लव अफेयर था प्रियंका से, एंड क्योंकि उनके फैमिली मेंबर हरास कर रहे थे, ही हैज़ कमिटेड सुसाइड एंड फाइनल फॉर्म सबमिटेड। ये फिर एक 18/11/17 को एक एप्लीकेशन देते हैं,
उस पर ये आए थे कि हमको एफआईआर नहीं होगा। हम लोग एफआईआर कर दिए हैं 306 में, जो यूडी केस में जो फाइंडिंग हुआ उसी बेसिस पर एफआईआर हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। जी, इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। जी जी हाँ हुजूर, ये कर देंगे। आप 17 से क्यों पेंडिंग रखते? हाँ, वो 306 में उसी टाइम कर देना चाहिए था। ये है, बट हो गया है एफआईआर। अब इस लाइट में अगर वो यूडी केस में, जब आपको यूडी केस में ये पता लग गया कि जी। उनको हैरेसमेंट की वजह से इन्होंने सुसाइड कर जी दिया, जी जी तो फिर आपने फाइनल फॉर्म कैसे सबमिट कर दिया? व्हाई डिड नॉट यू? नहीं, वो फाइनल फॉर्म सबमिट यूडी केस में हमने ये किया कि आप उसको कन्वर्ट करते ना हाँ, आप कन्वर्ट वो 306 में करना चाहिए। तब जी तो सबको करना चाहिए था, सब आपने नहीं किया। जी। His grievance But is, now the his FIR has grievance been is lodged, Your Lordship. lost, And- but you have been sitting over that. जी You have only done an empty formality because writ application was pending. And it was going to be taken up, so you have, just in order to save your skin, you have Your Lordship. acted hurriedly. जब हजूरी फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए तो अंडर विच प्रोविजन फिर से ये एफआईआर कर दिए उसी मैटर पर? नहीं, फाइनल फॉर्म सबमिट हुआ तो उसी फैक्ट पे हुआ है। Final form इनको नहीं करना चाहिए था, because he himself जी, says हुजूर, वो सही है वहाँ। जब हजूर in course इन्वेस्टिगेशन of inquiry of that unnatural death, he had reached to a conclusion. ये सबमिशन है लॉर्डशिप, जब ये फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से ये चले भी गए, ये दूसरे जगह चले गए, नवादा चले गए, कोतवाली नवादा में चले गए, और जब देखे कि यहाँ पर काउंटर फाइल करना है तो वहां से पता नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहता ऑन दैट सर्कमस्टांसेस दे में लॉज एफआईआर। कहाँ का है? खगोल का है? ये यहाँ कोतवाली का है, और जो उस समय के आईओ थे वो ट्रांसफर होकर चले गए रजौली में, एसएचओ बन गए नवादा में। और जब यहाँ से काउंटर, जब हमको ये हजूर, जब when the final form was submitted, What do you want? You have conveyed your case to me. Lordship, Now what do you want at this Lordship, stage? the Supreme Court has said in the Lalta case, if the any hearing By that stage is over, they have lodged one FIR. Lord in- अब क्या चाहिए सो बताइए हजूर ना। 5 साल के बाद किए हैं मेरा केस, तो क्या करना है सो बताइए ना मे बी मुझे। टेकन अगेंस्ट those police officer, Lord. Have you made him a party in this writ application? No, Lordship, I have Then- not been in the party, Lordship. Then- But may I permit, Lordship, the Supreme Court has said in the Lalta No, Devi case, all Lordship, right, that in view of the Supreme Court judgment, they have now registered FIR. Please try to understand. Lordship, may I permit to make them party, Lordship? Take appropriate steps Because separately. once the Lordship final form was submitted and my case was मेरा केस आप इसी, आपका कोई केस खराब नहीं हुआ, आप पकड़े हुए हैं, आप अननेसेसरी उसको जो है ना खींच रहे हैं एक ही बात को के द्वारा। मेरे हजूर के Now साथ FIR has been instituted. This court will direct. कहाँ का केस है? पटना? जी जी। पटना का। I will direct the SSP to supervise the case and take an appropriate. they have suppressed those facts in the counter affidavit. So far as your grievance against the then ASI, who is now SHO of Rajoli Police Station, is I have no any concerned, personal grievance, Lordship, but they have lost the 5 valuable years, Lordship. so you have a grievance. 5 साल उन्होंने So you have a grievance. that So grievance, if you have any grievance, that grievance still exists, Lordship. आप सुनना ही नहीं जी चाहते। जी जी हजूर, जी हजूर। आप जो एक लाइन पकड़ लिया है ना, बस उसी लाइन पर आप चले जा रहे हैं। नहीं नहीं हजूर कहा हजूर। आपको अगर कोई ग्रीवांस है, यू रेज योर ग्रीवांस सेपरेटली बिफोर हिज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, pursue that complaint, grievance. If you will not be satisfied with the decision of the disciplinary authority, then you can come to this court. लॉर्डशिप, लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप क्या, अब आप तो वकील हैं, आपको इतनी बात समझाना पड़ेगा। हजूर ऑर्डर में लिखा हम कोई कंसल्टेंसी खोल के रखे हुए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा सबमिशन है। हर चीज पे जो है, असल होता क्या है ना कि ऑर्डर लिखाने में जो इंटरटेन करते हैं आप लोगों को ना, कि आपको सेटिस्फाई करने के बाद ऑर्डर लिखा है, उसमें बहुत ज्यादा आप लोग लिबर्टी ले लेते हैं, और इसी में हम आपको उतनी लिबर्टी नहीं दें, हम समझ लिया क्या है नहीं है करके ऑर्डर लिखा दें, तो फिर जाकर के बाहर में बात कीजिएगा कि देखिए सुने नहीं हम।
दोनों हालत में आप लोग जो है ना कोर्ट को प्रोसीड करने नहीं देते। लिखिए, थर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर इकबाल लर्नेड एसी टू GP5 for the state. Petitioner in this case is aggrieved by and dissatisfied with the inaction on the part of the then ASI of police, namely one Darwari Chaudhary, who had conducted an inquiry into the unnatural death of the brother of the petitioner, and even as he found that the brother of the petitioner had committed suicide because of the harassment meted out to him by the family of the girl with whom he was in an affair, the said SI, instead of lodging an FIR, proceeded to submit a final form in the court below. We'll stop. Next, Land Council submits that at this stage, only in order to save his own skin, in a hurry, one case being Kotwali PS case number 139 of 2022 has been lodged on 21/3/2022 under section 306/34 IPC. We'll stop. In this manner, 5 years of precious time have been lost, and the grievance of the petitioner could not be taken care of. Next, Mr. Iqbal, learned counsel representing the state submits that in fact, in course of inquiry of the UD case itself, it had so transpired that brother of the petitioner had committed suicide because of the harassments meted out to him by the other side, the ASI had filed a final form. But at this stage, a first information report has been lodged, hence appropriate direction may be issued to the concerned police authorities to properly investigate the case and submit a report in the court. Next, having regard to the facts and circumstances of the case, this court is of the considered opinion that there is an inordinate delay on the part of the concerned police officer in registration of the first information report. Full stop. This aspect of the matter may be brought to the notice of the disciplinary authority of the concerned police station, who will take an independent view of the matter and redress the grievance of the petitioner on this score. Full stop. Next, as regards Kotwali PS case number 139 of 2022, this court directs that the SSP Patna cell issue appropriate instructions for proper investigation of the case, proper and impartial investigation of the case, and submit a report in the court below within a reasonable time. Next, this application stands disposed of accordingly.